Good evening, dear students. Welcome to Matrix DigiLearn, and we will discuss about the computer awareness. The questions are on your screen. The first question for you: in Microsoft Word, WISIWYZ stands for in Microsoft Word. WISIWYZ stands for option A. What you see is what you get. Preview. Option C. What you see, where you get. Option D. Print. And option E. None of these. Which option is the right answer? You may give your response by chat. In Microsoft Word, WISIWYG stands for Microsoft Word रे यार माने कौन? The right answer is option A. What you see is what you get. ताले ए जो फॉर्मेट रे तमे जहां भी देखिबो सेही फॉर्मेट रे ही तम डॉक्यूमेंट प्रिंट ही हबो बा जहां भी डॉक्यूमेंट तमे एई फॉर्मेट रे देखुथिबो एक्जेक्टली सेही फॉर्मेट रे जतबे प्रिंट मारिबो डॉक्यूमेंट प्रिंट ही परिबो. Option A, what you see is what you get is the right answer. Next question for you. Which of the following is necessary for multiplexing? Which of the following is necessary for multiplexing? Option A, high capacity data links. Option B, QAM. Option C, modems. Option D, parallel transmission. Option E, none of these. Which option is the right answer? Which of the following is necessary for multiplexing? Multiplexing pai kota hochi suitable. If anyone know the answer, then simply type the message by chat. The right answer is option C, modems, modulator and demodulator. In multiplexing, signals carried by the channels by the analog signals and that is converts to the digital form. So option C is the right answer. Next question for you. In a dash topology, if there are n devices in network, each device has n1 ports for cables. Option A, bus. Option B, mesh. Option C, star. Option D,
We are sorry for the mechanical breakdown and the termination of the some problem in internet. So let's start the session from this point where we have previously stopped this. All are in the active. All are active. Okay, we will proceed next. In a dash topology, if there are n devices in network, each device has n1 ports or cables. Which option is the right answer? Anyone can give the response? Okay, topology. Topology is a pattern of interconnection between the nodes and the devices. What is node? The devices, whatever connected to a network, that are known as the nodes. जहाँ भी कनेक्शन होइछि गोटे नेटवर्क रे ताको गोटे गोटे नोड कहंती से जो पैटर्न रे बा जो पद्धति रे से नोड्स गुडा को कनेक्शन होंती से मे बी कंप्यूटर होई पारे मे बी प्रिंटर होई पारे जहाँ भी होई पारे नेटवर्क रे जे इंटर कनेक्शन रे शामिल होंती सेमानो को गोटे गोटे नोड्स कहंती एंड से जो इंटर कनेक्शन जो पैटर्न टा सेटा को गोटे टोपोलॉजी बोली कहा जाय अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी टोपोलॉजी हमर बहुत प्रकार अछि स्टार टोपोलॉजी मेश टोपोलॉजी बॉस टोपोलॉजी लाइन टोपोलॉजी ट्री टोपोलॉजी एंड बहुत प्रकार तो मो क्वेश्चन अनुसार को टोपोलॉजी रे इन डिवाइसेस इन नेटवर्क जते भी नेटवर्क डिवाइस कनेक्टेड होंतु each device has n1 ports for cables. Anyone can give the response? Mesh topology. Yes, option B is the right answer. That is the mesh topology. Okay, next question for you. CPU stands for? CPU stands for? Very easy question. Option C is the right answer. Central processing unit. Central processing unit or option C is the right answer. Next question for you. SanDisk. ScanDisk command is used to ScanDisk command. Why use? Why SanDisk command is used? Anyone can give the response? SanDisk command. Option D is the right answer. All the things are right. Diagnose the hard disk error. Hard disk रे जदि किछि एरर थाए ताको भी करेक्शन करि थाए कारण आमे कहू स्कैन डिस्क माने डिस्क के स्कैनिंग करिवो एनालाइज द हार्ड डिस्क एरर हार्ड डिस्क रे जदि एरर किछि थिबो ताको एनालाइज भी करि परिवो रिपोर्ट द स्टेटस ऑफ फाइल्स ऑन द डिस्क रे जदि किछि थिबो ताको स्टेटस देई परिवो एंड ऑल ऑफ द अबव तो सब किछि ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू computer language used on internet is computer language बा जो आमे कोजे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली जोटा इंटरनेट रे यूज करा जाय से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ता कोन कोबल बेसिक जावा पास्कल एंड फोर्ट्रान एस जावा हमर वेब पेज गुडा को साधारणतः जावा स्क्रिप्ट रे लिखा जाय थाए जहां भी आप गुडा को डेवलपमेंट करा जाय जावा बेस्ड ही डेवलपमेंट करा जाय so Java is the right answer. Next question for you. An image in a web page can be aligned dash and dash using HTML coding. Option A, right. Option B, left. Option C, center. Option D, both B and A. And option E, none of these. An image in a web page can be aligned dash and dash using HTML coding.
Option D is the right answer. Both B and A, both method रे आमे interconnection कर दे परिवा. Yes, option D is the right answer. Next question for you. तो इमेज लिखिबार कोडिंग भी तुमको एठी किछि स्क्रीन रे शो करा होची. तो HTML जतले कोडिंग लिखा जाए एई भली किछि पका जाए इमेज SRC एमती पकई की कोडिंग टा लिखा जाए. Next question for you. The permanently aged programs in ROM that automatically begins executing the computer's instructions is the. ताले ऑप्शन गुडा को तमर देछि स्क्रीन रे. ऑप्शन ए होची CMOS, ऑप्शन बी ROM, ऑप्शन सी RAM, ऑप्शन डी BIOS and ऑप्शन E none of these. The permanently aged programs in ROM that automatically begins executing the computer's instruction. ताले ROM रे थिबा इंस्ट्रक्शन टा जेतेबेले कंप्यूटर को स्टार्टिंग करिबा पई हेल्प करी. सेई जो इंस्ट्रक्शन टा को जो तिरे लिखा जाई थाए बा सेटा को माने कंप्यूटर रीड करे सेई जिंसटा को कोन बोली कहंती. Is option D is the right answer. That is the BIOS. BIOS means basic input output system. ता माध्यम रे कंप्यूटर बेसिकली कोनोसी इनपुट बा आउटपुट टास्क कैरी आउट करि थाए. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. The circuit board that contains RAM chips is known as SIMM, CMOS, option C ROM, option D RAM board, option E none of these. Anyone can give the response? The circuit board that contains RAM chips is known as. जो circuit board रे हमर RAM chip थाए ताको कोन बोली कहंती. ताको कहंती ऑप्शन ए सिम बोली कहंती. माने सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल. तमे देखिबो मदरबोर्ड रे गोटे मुख्य जगह रे दीटा पोर्ट टाइप रो थिबो जो जगह रे कि दीटा RAM तमे ऐड भी कर देई परिबो. तो सेही ओटा को कहंती सिम. सिम मान होची सिंगल लाइन मेमोरी मॉड्यूल. ताले से जो सिंगल लाइन माने RAM ता गोटे सिंगल लाइन बडी गोटे पातिया बडी जिंस सेही जगह रे सेटा को पुट कर देले बस RAM टा कंप्यूटर सहित अटैचमेंट हो जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. द प्राइमरी पर्पस ऑफ द शटडाउन प्रोसीजर इन यूनिक्स सिस्टम इज दैट. द प्राइमरी पर्पस ऑफ शटडाउन प्रोसीजर इन यूनिक्स सिस्टम जेमते हमर ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज अछि सेमते ओटा ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स भी यूज करा जाए. तो से प्राइमरी पर्पस यूनिक्स रो शटडाउन पई कोन. ऑल एक्टिव प्रोसेस मे बी प्रॉपर्ली क्लोज्ड. All users been informed that system is being switched off. Option C, the power to disk is shut off. Option D, both B and A, and option E, none of these. Option A is the right answer. All active process may be properly closed. ताले एटा जेकोनसी ऑपरेटिंग सिस्टम रो मूल जिंस यूनिक्स नाही लिनक्स नाही बस एटा होची मूल जिंस जे कंप्यूटर रो जेकोनसी प्रोसेस चली थिबो सेटा प्रॉपर्ली क्लोज होबा दरकार तापर जे शटडाउन होबा कथा हबो से जेकोनसी ऑपरेटिंग सिस्टम हो से विंडोज हे पारे यूनिक्स हे पारे लिनक्स हे पारे एनी अदर मे बी. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. द मोस्ट कॉमन software used command in the dash function which causes Excel to display a sum each time the control field changes. The most common software used command is the dash function which causes Excel to display a sum of each time the control field. Yes, option A is the sum. Excel ro sum function रे कामटा ही थाए. What is that function? Function means the predefined calculations that are already given name for easy use. Function होची एई भली जिंस जहा कि ऑलरेडी पूर्वरु तार ना दिया कि थाए जहा को कि यूजर अति सहज रे व्यवहार करि परिबो. सो सम फंक्शन रे ही हमर सम टा बाहरी पारे. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. A dash backup contains a copy of every program, data and system file on a computer. A dash backup contains a copy of every program, data and system file on a computer. Option A, bootstrap. Option B, restoration.
option C differential, option D pool, option E none of these. A dash backup contains a copy of every program data and system files on a computer. ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ. Yes, option D is the right answer, pool. Next question for you. Antivirus software is an example of. आमे समस्त जानिचे कंप्यूटर रे अच्छा ए जो तमे कहूच बूटस्ट्रैप माने कोन बूटस्ट्रैप माने जेतेबेले आमे कोन करि थाउ ना कंप्यूटर रो कोनोसी प्रोग्राम को स्टार्ट करू सेतेबेले बूटिंग रो गोटे प्रोसीजर थाए तो से जो बूटिंग रो प्रोसीजर टा जोटा कंप्यूटर को स्टार्टिंग ऑफ हेल्प करे स्टार्टिंग ऑफ होबा पई दैट इज नोन एज द बूटस्ट्रैप दैट इज अ सेक्टर ऑफ द कंप्यूटर. नेक्स्ट तमरो पई क्वेश्चन होउची एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज एन एग्जांपल ऑफ. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर माने कोन बा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर टा कोन an operating system, business software, a security utility, an office suite, and none of these. Anyone can give the response? Antivirus software is an example of. Antivirus software टा उडे कोन? Yes, option C is the right answer, security utility. प्रथम कथा आसला एंटीवायरस होची कंप्यूटर पई गोटे सॉफ्टवेयर एटा होची प्रथम कथा. ताले हमर सॉफ्टवेयर होची दुई प्रकार गोटे सिस्टम सॉफ्टवेयर आ गोटे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ताले सिस्टम सॉफ्टवेयर चारिटा कैटेगरी थाए. गोटे होची तमरा बायोस, गोटे होची ओएस, गोटे होची डिवाइस ड्राइवर आ गोटे होची लैंग्वेज प्रोसेसर. सेम दिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मध्ये विभिन्न कैटेगरी रे थाए. जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड डेवलपर टूल्स. तो ये जो एंटीवायरस तमे कहउछ इट इज ए सिक्योरिटी यूटिलिटी बा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. So option C is the right answer. Next question for you. The sharing of a medium and its path by two or more devices is called. Option A, demodulation. Option B, modulation. Option C, multiplexing. Option D, demultiplexing. And option E, none of these. The sharing of a medium and its path by two or more devices is called. Option A, demodulation. Option B, modulation. Option C, multiplexing. Option D, demultiplexing. And option E, none of these. Yes, option C is the right answer. That is the multiplexing. Multiplexing means combining of multiple streams of information transmission over a share medium. जो medium रे हमें sharing करूथिबा combine करि दिए से हमरो जो stream गुडा को. Next question for you. Most news readers present news groups articles in. Very interesting thing, very practical thing. Most news readers presents news groups articles in. Option A, mail. Option B, threads. Option C, column. Option D, row. Option E, none of these. Question number 315. Most news readers presents news groups articles in. अधिकांश न्यूज रीडर एमानक भितरु जो न्यूज ग्रुप पकांती कोटाकु सेमाने यूज करंती. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, थ्रेड्स. हमें समान जानिचे थ्रेड्स द्वारा सेमान को न्यूज गुडा को सेमाने पकांती. ताले थ्रेड्स होची गोटे इंटरनेट रे टेक्सचुअल पिक्चरियल रिप्रेजेंटेशन जहां माध्यम रे कि हमें किछि जिंसोडा को शेयरिंग कर दे परिबा इजीली. तापरे आ गोटे जिंस थ्रेड रे गोटे मल्टीपल जिंस थाए एटा होची आरे. आरे माने अनेक गुडा मेसेज को कंबाइन भाबे बा लिंक थिबा जिंस गुडा को गोटे जगह रे शेयरिंग करि हि जे. Next question for you. In addition to keying data directly into the database, data entry can be done from A, table. Option B, input form. Option C, field. Option D, data directory. And option E, none of these. In addition to keying data directly into the database, data entry can be done from which one? Option B,
इनपुट फॉर्म एस तमर जेतले डाटा एंट्री आमे करिबा तो सेतले गोटे इजीली डाटा एंट्री करबा को ले बा डाटा एंट्री काम को आमे जेतले सिंपलीफाई करबा बा डायरेक्टली करबा को चाहूतिबा एपट टेबुल सेपट टेबुल डाटाबेस हम जानि छे अनेक गुडा टेबुल को नेकी करा जाय तो मल्टीपल टेबुल रे जदि हमकु सेम टाइम काम करबा पई असुविधा होतिबो असुविधा तो हबो निश्चित भाबे सेही डाटा एंट्री काम को सिंपलीफाई करबा पई हमक निश्चित भाबे यूज करबा इनपुट फॉर्म फॉर्म माध्यम रे डाटा एंट्री काम सिंपलीफाई होता है तो फॉर्म भली डाटाबेस रे मध्ये अनेक गुडा जिंस यूज करा जाय जेमति कि क्वेरी कहंती फिल्टर कहंती रिपोर्ट कहंती एगुडा केबे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन आसिले ता रिलेटेड हमें डिस्कशन करिबा नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू devices such as monitors and printers that are connected to a computer are called devices such as monitors and printers that are connected to a computer are called option A system devices option B processing devices option D peripheral devices option D input devices and none of these devices such as monitors printers that are connected to a computer are called S option C is the right answer peripheral devices सेगुडा गोटे peripheral device बोली हमें कहू next question for you when shadowing is enabled in computer BIOS ए जस्ट टिके आगु कहउथली सिस्टम सॉफ्टवेयर गोटे पार्ट BIOS जोटा कहंदी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम when shadowing is enabled in computer BIOS then values are stored twice in the memory for the redundancy. Instructions stored in the various ROM chips are copied into option C. The conventional memory is remapped to the top of the and option D. Data stored in ROM chips on adapter cards are shadowed and option E. None of these. जेतेबेले शैडोइंग ऑप्शन एक्टिव हो जाई थाए एनाबल हो जाई थाए कहा पई बायोस पई सेतेबेले कोन हुए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम पई एस ऑप्शन बी ही हेइथाए कोन हेइथाए इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन वेरियस रॉम चिप्स आर कॉपीड इनटू ता माने जहा किछि हमरो हेइथिबो राम सेडा को कोन हेइजिबो ना कॉपी हेइजिबो बा सेडा को माने किछि फीचर्स एक्टिव हेइजिबो एंड किछि फीचर्स डीएक्टिव हेइजिबो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ए सीरीज 100 post error code indicates a problem with the बेले बेले एमती गोटे आसे ए सीरीज 100 post error code indicates a problem with the कंप्यूटर रे बेले बेले तमे देखिथिबो सेतबेले तमे स्टार्ट करिथिबो सेतबेले गोटे एई भला मेसेज आसथिबो 100 post error केबे केबे तमे देखिथिबो नेटवर्क रा नेट कटि गला इंटरनेट कनेक्शन कटि गला वेरी कॉमन थिंग एटा कटि गला को देखिबो एई टाइप रे गोटे एरर आसीबो केबे ट्राई करके निश्चित भाबे देखिबो एंड केबे रेस्पॉन्स दबो तो सेटा कोन पाई हुए से प्रॉब्लम ता कोन पाई हुए हमें तो नेटवर्क कनेक्शन ठीक थाए सब तो ठीक ठाक थाए बट कोन पाई एटा आसे ऑप्शन ए रोम एंड रैम ऑप्शन बी हार्ड ड्राइव ऑप्शन सी सिस्टम बोर्ड ऑप्शन डी वीडियो अडॉप्टर एंड ऑप्शन ई नॉन ऑफ दिस एस ऑप्शन सी सिस्टम बोर्ड सेटा जणा पड़े जे सिस्टम बोर्ड रे किछ गोटे प्रॉब्लम होछ आइदर प्रोसेसिंग रे हो बा सिस्टम बोर्ड रे किछ प्रॉब्लम आरंभ होईची तो सेथि पई के एटा बेले बेले सेटा सपोर्ट निए नाही एंड एटा कटि जाय ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू माने सीधा सळ कहले कैन नॉट क्रिएट अनदर प्रोसेसिंग बा कैन नॉट क्रिएट अनदर एटमॉस्फियर बा जोटा कहंती हो सेही बोली जिंस करिया पई हो ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्ट्स इन एन एक्सेस डेटाबेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्ट्स इन डेटाबेस queries report option B table form option C macro and modules option D all of the above what is the following objects in an access database option A queries reports option B table form option C macros modules option D all of the above you have give the response as A just see database रो हमें ऊपर टिके मु जस्ट टिके कहि दोची तमे एंती आंसर आसुची बोली देई दोछ बट एटर कंफ्यूज हे गला फैक्ट प्रथम बुझिबा दरकार
आमर डाटाबेस विशेषकर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को व्यवहार करी आमे डाटाबेस रे तयारी करिथौ एंड से जो डाटाबेस रे आमे तयारी करू से डाटाबेस रे अनेक गुडा जिंस कथा आसे जेमति डाटाबेस रे कंपोनेंट्स गुडा भी सेडा सब कहि थांती जेमति कि तमरो गोटे जिंस सुनिया को मिले टेबल गोटे जिंस सुनिया को मिले रिकॉर्ड गोटे जिंस सुनिया को मिले क्वेरी गोटे सुनिया को मिले रिलेशन गोटे सुनिया को मिले की गोटे सुनिया को मिले तमरो जोटा को जो क्वेरी रिपोर्ट तो एई बळी जो फॉर्म तो एई बळी वेरियस जिंसडा सुनिया को मिले मो क्वेश्चन रे से सब ऑप्शन गुडा का थिला तेनु करी कि ऑप्शन ए रे भी थिला ऑप्शन बी रे भी थिला ऑप्शन सी रे भी थिला तो सब किछि ठीक तेनु कर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर सो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू a flaw in the program that causes it to produce incorrect or inappropriate results is called a flaw in a program that causes it to produce incorrect or inappropriate result is called option A byte option B bug option C attribute option D unit problem option E none of these is सेही जो इनकरेक्ट हो जाए माने क्वेश्चन टाको केते प्रकार स्टाइल रे पचरा जाई पारे कंप्यूटर रो एरर माने हुई बग तो से क्वेश्चन टाको हमें भिन्न भिन्न स्टाइल रे पचरी परिबा तो एठी ओटे कॉम्प्लेक्सिटी वे रे से पचार देला जने कंफ्यूज हो जीवो एस बग इज द राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बग तो कंप्यूटर रो एरर माने बग एरर को खोजिबा माने डीबग नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू टू असेस ए मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर यूज और often use a option A node option B terminal option C desktop option D handheld option E none of these to assess a mainframe or supercomputer users often use a गोटे mainframe बा supercomputer को assessing करिबा कोले यूजर कोन यूज करिथाय टर्मिनल ही यूज करिथाय तो टर्मिनल द्वारा ही हमर कोन करिवे मेन फ्रेम बा सुपर कंप्यूटर को असेसिंग करिवे काहे कि ना एट द सेम टाइम देयर आर मेनी यूजर्स वर्क विथ ए कंप्यूटर से जो सुपर कंप्यूटर कहउछ गोटे समय रे अनेक गुडा यूजर बसी काम करिथांती सेथि पई टर्मिनल रा आवश्यक पड़े नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू कनेक्शंस टू द इंटरनेट यूजिंग ए फोन लाइन एंड ए मोडेम आर कॉल्ड हमें जतले इंटरनेट रे कनेक्शन करिथाउ बहुत प्रकार मेथड अछि तो से जो बहुत प्रकार मेथड भितरे कनेक्शन यूजिंग ए फोन लाइन एंड मोडेम एवं मोडेम को यूज करके जो इंटरनेट रो कनेक्शन करा जाए बाय द वे सेटा को हमें कोन बोली कहिथो ऑप्शन ए डायल अप कनेक्शन ऑप्शन बी डिजिटल कनेक्शन ऑप्शन सी ब्रॉडबैंड कनेक्शन ऑप्शन डी डिश कनेक्शन ताको एक्चुअली डायल अप कनेक्शन बोली कहा जाय थे तो फोन लाइन आ मोडेम द्वारा जो कनेक्शन करा जाए ताको गोटे डायल अप कनेक्शन बोली हमें कहिथो Okay, next question for you. Dash is a program that makes the computer easier to use. A dash is a program that makes the computer easier to use. Option A, application. Option B, operating system. Option C, utility. Option D, network. And option E, none of these. Anyone can give the response? A dash is a program that makes the computer easier to use. Is option C is the right answer. Utility. खाली यूटिलिटी प्रोग्राम जो पूर्व कहले एंटीवायरस ता नुहे यूटिलिटी प्रोग्राम बहुत उडाय अछि डिस्क क्लीनअप भी यूज करा जाय डिस्क डीफ्रैगमेंटर भी यूज करा जाय डिस्क बैकअप भी यूज करा जाय डिस्क कंप्रेसर भी यूज करा जाय ये सब गोटे यूटिलिटी प्रोग्राम ताले ए जो यूटिलिटी प्रोग्राम कंप्यूटर को इजियर कर दिए सहज कर दिए यूज करिया पे तमे कहबो कोन कंप्यूटर में न पढिले ही जीवो बो से कथा कहू नाही बट कंप्यूटर रो काम उडा को सहज जे जेमति कि भाइरस पसी जाउची तो भाइरस पसीबो अर्थ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम बा डाटा फाइल्स उडा तो करप्ट ही जीवो ना तो सेही जो भाइरस को अटकेबा पई एंटीवायरस दरकार से ओडी यूटिलिटी प्रोग्राम गोटे फाइल जेति जगह रे रहिबा कथा ता थारो अधिक जगह रे स्प्रेड ही जाउची तो सेटा हो जोडे पी प्रॉब्लम the single file could spread across the disk drive where the space was available file creation and modification of files से जो सिंगल फाइल स्प्रेड हे जे पूर्व से जगह थिला अन्य फाइल को हम स्टोर करि परथले बा मॉडिफिकेशन करि परथले तो सेथि पई कि कंप्यूटर रे कोन करे डिस्क डीफ्रैगमेंटर रे यूज करा जाय जहां पर कि से फ्रैगमेंटेड फाइल बा फोल्डर्स गुडा कंसोलिडेट हेते अननेसेसरी फाइल गुडा को अजथा सिस्टम रे रहि कि सिस्टम को जाम करितै से फाइल गुडा को हमें तयारी करि न थाउ
जेमती नेट ब्राउजिंग समय फाइल क्रिएशन डिलीशन समय से फाइल गुडा आपे आपे हिजे तो ताकू गोटे प्रोसीजर यूटिलिटी प्रोग्राम अछि डिस्क क्लीन अप ता माध्यम रे क्लीन करि दिया जाय गोटे फाइल को छोट कर दिया जाए डिस्क कंप्रेसर रो काम जहां भी हो तो यूटिलिटी काम ही कंप्यूटर को बहुत इजी कर देता है कंप्यूटर काम गुडा को बहुत सहज कर देता है नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू to assess properties of an object the mouse technique to use a option A dropping option B dragging option C right clicking option D shift clicking option E none of these in this third section this is very topical questions and this is very interesting questions also पूर्व बहुत गुड़ा क्वेश्चन हमें डिस्कशन करी छे बट थर्ड सेक्शन रे बहुत इंटरेस्टिंग जिंस गुड़ा का अछि तो ऑप्शन ए सॉरी ऑप्शन सी राइट क्लिकिंग इज द राइट आंसर तो राइट क्लिकिंग होची एबळी गोटे जिंस जहा कि प्रॉपर्टी विंडो को ओपन करथाय जेमति कि एस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर प्रॉपर्टीज विंडो ताल प्रॉपर्टीज विंडो माने कोन आमे सपोज डेस्कटॉप ऊपर राइट क्लिक कर दोउचे जो पॉपअप मेनूटा आसुची दैट इज द प्रॉपर्टीज विंडो तो सेठी आमे बहुत जिंसोडा को चूज करिथाउ ओपन करिथाउ रीनेम करिथाउ कॉपी करिथाउ पेस्ट करिथाउ से पॉपअप मेनू द्वारा सब होई थाए सो दैट इज नोन एज द प्रॉपर्टीज विंडो सेति में देखिबो कीबोर्ड रे भी ओटे की थाए कि जो राइट टिके राइट सेक्शन को पळे आसीबो तो से जो शिफ्ट पाखरे सेटा थाए प्रॉपर्टीज विंडो बोली से ताको कहंदी से बटन टा क्लिक कर देले प्रॉपर्टीज विंडो भी ओपन होई पारे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू द डैश परफॉर्म्स अ सिंपल मैथमेटिक्स फॉर सीपीयू द डैश परफॉर्म्स सिंपल मैथमेटिक्स फॉर सीपीयू DIMM ALU BOSS register none of these which option is the right answer the dash performs simple mathematics for CPU option B is the right answer ALU means arithmetic logic unit से simple हो कि जहां भी हो तो ALU रो काम होला all arithmetical and logical tasks carried out here समस्त logical एवं आमरो मैथमेटिकल टास्क गुडा को इठी कैरी आउट होता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू when creating a word processed document this step involves the user changing how words on the page appear both on the screen and in printed form when creating a word processed document this step involves the user changing how words on the page appear both on the screen and in printed form. Option A, inserting tables and indexes. Option B, editing text. Option C, formatting text. Option D, proofing documents. And option E, print preview. Which option is the right answer? ऑप्शन सी इज द सॉरी ई इज द राइट आंसर प्रिंट प्रीव्यू जेतबे आमे ओटे वर्ड प्रोसेस रे डॉक्यूमेंट ता क्रिएशन करि दैछे यूजर माने देखि परिबो जे कोन केमदि चेंजिंग करूची एवं सेटा प्रिंटिंग केमदि कोन करिबा को जाउची कारण प्रिंटिंग पर आ किछि करि हुए ना सेथि पई सेही जिंसडा कहंती हमर प्रिंट प्रीव्यू मोड रे से देखि परिबो जे को भली डॉक्यूमेंट ता प्रिंट आउट करिछि को भली पेज सेटअप करिछि को भली लेखार फॉर्मेटिंग करिछि कोन कोन करिछि सब किसी देखि परिबो आ एक्जेक्टली सही वाला प्रिंट मारलर को भी प्रिंट पळे आसीबो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू टू मेक द नंबर पैड as directional arrows you press dash key caps lock key num lock key arrow key shift key and none of these to make the number pad act as directional arrows you press dash key option A caps lock key option B num lock key option C arrow key option D shift key and option E none of these yes option B is the right answer num lock key जदि नंबर पैड को तमे यूज करबा को चाहूतिबो ताले नम लॉक की को तमे ये कर दबो त कोन करबो लॉक कर दबो ताले सेटा नम लॉक कीटा ऑन हे जिवो हमरो एपडे हे जिवो अच्छा कीबोर्ड रे हमर तीनटा सेक्शन थाए एटा समस्त हम जानिबा दरकार कीबोर्ड रे ओटे तीनटा सेक्शन थाए गोटे फंक्शन सेक्शन गोटे नॉर्मल सेक्शन एंड गोटे न्यूमेरिक सेक्शन नॉर्मल देखियो जोटी फंक्शन सेक्शन सेटी F1 थारु F12 पर्यंत की अछि नॉर्मल सेक्शन रे तो सब किछि अछि से नंबर की गुडा का आउथरे पुनी रिपीटेडली अछि अल्फाबेट पाखरे अल्फाबेट की गुडा अछि
डिफरेंट सिंबल की गुडाक अछि तमर मॉडिफायर की गुडाक अछि स्पेशल की जंदे ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट कहउछ एगुडाक भी अछि ता पर एपर साइड को गोटे न्यूमेरिक सेक्शन माने स्पेशल नंबर की कुछ जगह इंपोर्टेंस जाय छै तो सेई जो नंबर नॉम लक्स सब बेले सेपरेट टाइपिंग कले हुए नहीं तो बाय द वे आम जो नॉम लक्स की कीबोर्ड रो ऑन कर दोजे एंड सेटा काम होई परिबो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू एवरी कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर इज आइदर डैश सॉफ्टवेयर और सीपीयू रैम ऑप्शन बी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ऑप्शन सी application software or system software option D input devices or output devices and none of these today's class is a very interesting class questions are very interesting ऑप्शन बी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एस जहा किछि तमे देखुछ कंप्यूटर रे हमरो अछि से गोटे कंपोनेंट बा उपादान हेतिबो से मे बी सेटा गोटे हार्डवेयर पार्ट हेतिबो बा गोटे सॉफ्टवेयर पार्ट हेतिबो हार्डवेयर पार्ट माने जोटा को हमें फिजिकली सीन करूचे टच करूचे and तार गोटे शेप और साइज अछि एंड सॉफ्टवेयर माने जोटा को हमें देखि पारु नाही बट कंप्यूटर रे मेनी टास्क से बा काम गुडा से परफॉर्म करि देई पारुची ओके ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ए वेबसाइट एड्रेस is a unique name that identify a specific dash on the web. Option A, PDA. Option B, web browser. Option C, website. Option D, link. And option E, none of these. Yes, option C is the right answer, website. Just see as a unique name. जेमती आमर बही थाए तो एस वेबसाइट जेमती आमर बही थाए से बही रे अनेक गुडे पृष्ठा थाए तो वेबसाइट इज लाइक दैट गोटे बही बड़ी जिंस सेथरे जहा गुडा देखा थाए ताकू गोटे गोटे आमे वेब पेज बोली कहू तो से साधारणतः से जो जिंसटा आमर तार गोटे जेम बही सब अलग अलग ना दिया जाय से प्रत्येक वेबसाइट मध्ये अलग अलग काहार सहित काहार गोटे लिंक नथिबो समस्त किछि ना किछि गोटे अलग थिबो तो से जो जिंसटा होची वेबसाइट नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू The dash of software contains a list of commands and options. The dash of software contains list of commands and options. Option A, menu bar. Option B, title bar. Option C, formula bar. Option D, tool bar. And option E, none of these. The dash of software contains list of commands and options. S. Option A, menu bar. सेथरे अनेक गुडाए कमांड्स बा अनेक गुडाए ऑप्शंस गुडा थाए से मेनू रे क्लिक कले हमें अनेक गुडाए सब मेनू गुडा को भी पाउ तो मेनू रे क्लिक कला पर जो जिंस मिले ताकू कहते सब मेनू सो दैट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑप्शंस एंड कमांड्स नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ए वर्ड इन ए वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ड opens another document is called option A hyperlink option B anchor option C reference option D URL and option E none of these. A word in a web page that when clicked opens another document is called. Anyone can give the response? Yes, that one is known as hyperlink. So the hyperlink कहंती. Hyperlink means it creates a link between the web page with another web page. गोटे पेज सहित आ गोटे पेज रो लिंक किछि थिबो ताको हमें जेतले माउस पॉइंटर नबा why not URL URL is a complete web address URL is a complete web address and URL is a address so URL has three parts one is the access method next is your computer location and last is your file location so a simply example of a URL https://www.microsoft.com/index.html this is a address this is not a link and so hyperlink ऊपर जो हमें माउस पॉइंटर नहीं जाउथिबा सेटा गोटे हाथ चिन्ह को बदली जाउथिबो ता क्लिक कर देले हमर गोटे लिंक टॉपिक को नेउथिबो so this is the solution or this is the clear point next question for you personal computers can be connected together to form a dash option A supercomputer option B server option C enterprise option D network and option E none of these personal computers or PC can be connected together to form a yes option D is the right answer
दैट इज नेटवर्क पीसी गुडा को परस्पर सहित कनेक्टेड होती गोटे नेटवर्क तैयारी करिया पाए नेटवर्क जोटी जाल सदृश काम हुए dash is processed by computers into information option A processor option B numbers option C input option D data and option E none of these dash is processed by the computer into information option A processor option B numbers option C input option D data and option E none of these anyone can give the response option D is the right answer that is data means raw fact the raw fact माने हमें जानि न थाउ तार कोन रिजल्ट आसीबो बट हमको कंप्यूटर को दबा को पड़े and say raw fact गुडा को कंप्यूटर नेला परे ताको प्रोसेसिंग करी यूजफुल बा मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जनरेट करे so option D data is the right answer next question for you reusable optical storage will typically have the acronym option A RW option B CD option C DVD option D ROM and option E none of these reusable optical storage will typically have the acronym anyone can give the response the right answer is RW RW means rewritable ता माने कोन गोटे ऑप्टिकल डिस्क रे तमे किछि डाटा स्टोर करि देइछो एंड परवर्ती मुहूर्त रे से जो इंफॉर्मेशन को काटी पुणे आउथरे नुवा इंफॉर्मेशन भी स्टोर करि देइ परिबो सो दैट इज RW means rewritable option A is the right answer next question for you a dash is a collection of data that is stored electronically as a series of records in a table. A dash is a collection of data that is stored electronically as a series of records in a table. Option A, presentation. Option B, spreadsheet. Option C, database. Option D, web page. And option E, none of these. A dash is collection of data that is stored electronically as a series of records in a table. Option C is the right answer that is the database. Data को सिटी systematically वारे रखा जाए बोली तार ना होची database. So database is collection of informations organized in such a way so as to make it easy to view, search, retrieve as per our requirement. डाटाबेस ही इंफॉर्मेशन मानकर एभली भाबे कलेक्शन जोटी की निर्दिष्ट ऊपर डाटा को गोटे स्टोर करा जाय थाए जहा की इजीली माने समय सहज रे टाइमली माने समय अनुसार एंड एफर्टलेस माने कम परिश्रम रे हमें कोन करि परिबा रिट्राइव माने पुनरुद्धार करि परिबा देखि परिबा जहा करि परिबा सो एक्टिविटीज दैट आर रूटीनली परफॉर्म्ड विथ ए डाटाबेस इंक्लूड एडिंग एडिटिंग डिलीटिंग फाइंडिंग सॉर्टिंग क्वेरिंग and reporting information database रे information डाक रहिबा द्वारा ये सब जिंस डाक ही थाए तो that database is a medium that can store electrically by electronically the informations next question for you holding the mouse button down while moving an object or text is known as option A dragging option B moving option C dropping option D highlighting and option E none of these which option is the right answer holding the mouse button down while moving an object or text known as option A right that is known as the dragging so dragging means press kariba and ताको move kariba टाणीबा सेटा को कहते dragging someone asked me sir tell what is a click sometimes मु भी कंफ्यूज रहिली तो क्लिक बोली कोन ताको बुझेइबी एक्चुअली क्लिक रो डेफिनेशन होची place the mouse pointer on the desired object then press and release the mouse button in quick succession सेटा होची क्लिक तो क्लिक रो जदी गोटे डेफिनेशन हम एमती जण को बुझेबा को चाहिबा हठात हम मुंड को भी आसीबो नाही तो बेले बेले डेफिनेशन भी एमती थाए
ताकू टिके बुझी हमको सॉल्यूशन करबा को पड़े एटा माने बहुत इजी जिंस लगे बहुत डिफिकल्ट भी हो जाए टिके टिके न बुझी पारिले ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू equal to sum b1 colon b2 is an example of a dash option A formula option B function option C cell address option D value and option E none of these yes the right answer is option B that is a function एटा होची गोटे फंक्शन काहेकि ना इक्वल टू सम बसिला सम टा होची एक्सेल गोटे फंक्शन जदि आमे मैनुअली लिखि तांते b1 प्लस b2 एई इक्वल टू देहा पता निश्चित भाबे काहेकि ना ऑल फार्मूलाज और फंक्शंस इन एक्सेल मस्ट बी बिगिन विथ एन इक्वल टू साइन ए फार्मूला हो बा फंक्शन हो गोटे समान चिन्ह रो आरंभ हुए तमे जदि डायरेक्ट लिखि तांतो ताले सेटा फार्मूला कह जाय थांदा जेतु सम पुट हो जायछि एंड विद इन ब्रैकेट डाटा रेंज टा भी दिया जायछि हमर जो रेफरेंस कहंती सेल रेफरेंस जेमति कि गोटे कहंती रिलेटिव सेल रेफरेंस गोटे कहंती एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस गोटे कहंती मिक्स्ड सेल रेफरेंस तो एटी गोटे रेफरेंस दिया जायछि एटू एई पर्यंतर डाटा रेंज रो हमर सम बाहर करिवार अछि सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फंक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट इमान को भीतर कोटा गोटे कंट्रोल यूनिट रो काम नुह ऑप्शन ए एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस ऑप्शन बी रीड इंस्ट्रक्शंस ऑप्शन सी interpret instructions option D direct operation and option E none of these which option is the right answer which of the following is not a function of the control unit or CU anyone can give the response option A is the right answer execute instructions execute करे नहीं से एग्जीक्यूट करिया पे हमर इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस सब जिसोडा को अछि तो से रीड भी करे इंटरप्रेट भी करे डायरेक्शन भी दिए को यूनिट केमदी कोन काम करिवो सो एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन ता नुह सेटा एएलयू रो काम एएलयू बाय अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट रो काम सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू द सॉफ्टवेयर टूल्स दैट एनेबल ए यूजर टू इंटरैक्ट विथ ए कंप्यूटर फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस आर नोन एज ऑप्शन ए network software option B hardware option C shareware option D application option E none of these the software tools that enable a user to interact with a computer for a specific purpose option D is the right answer actually सेटा को गोटे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोली कह जाए जहा कि कंप्यूटर रे स्पेसिफिक काम करा जे जस्ट टिक आगुर कहउतली सॉफ्टवेयर रे दुईटा कैटेगरी अछि गोटे सिस्टम सॉफ्टवेयर गोटे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चारिटा कैटेगरी जोटा कहउतली जनरल पर्पस स्पेसिफिक पर्पस यूटिलिटी एंड डेवलपर टूल्स ए जो स्पेसिफिक पर्पस तमे कहउछ तादरे किछि स्वतंत्र प्रकार काम करा जे जेमति कि तमे केबे एटीएम मशीन को जाइथिबो सेटा जो एटीएम मशीन रे जोटा लोडा हिछि सेटा गोटे स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ता काम होला पैसा थोइबो पैसा उठेइबो फंड ट्रांसफर करिवो पासबुक अपडेट करिवो ता दिरा आउ किछि कला लागु से हबो नै सेमति गोटे पेरोल सॉफ्टवेयर अछि एम्प्लॉय मान को जो पीएफ ईपीएफ सब कैलकुलेशन होय जहा भी हो सेउडा गोटे स्पेसिफिक पर्पस रे काम पई हेतै तो सेटा गोटे ऑब्वियसली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कोन नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू dash view shows how the contents on the printed page will appear with the margin header and footer dash view shows how the contents on the printed page will appear with margins header and footer options are full screen reading option B draft option C outline option D page layout and option E none of these dash view shows how the contents on the printed page will appear with the margins header and footer anyone can give the response option D is the right answer yes पेज लेआउट रे तमे सब किछि जिंसोडा का देखि परिबो प्रिंटेड पेज रे केमिति आसीबो सब किछि देखा जिवो जहा देखा जाउतिबो एंड बाय द वे तमे प्रिंटर रे प्रिंट मारिले सेही बडी प्रिंट ही बाहर जिवो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इफ यू डोंट वांट टू सिलेक्ट एनी ऑप्शन आफ्टर ओपनिंग ए मेनू देन क्लिक मेनू टाइटल अगेन और प्रेस की डैश टू क्लोज द मेनू ऑप्शन ए टैब ऑप्शन बी शिफ्ट ऑप्शन सी escape option D F1 option E none of these if you
don't want to select any option after opening a menu, then click menu title again or press dash key to close the menu. Option C is the right answer. Escape key. जदि आमे गोटे ओपनिंग करिचे एंड से मेनू को नहीं कि आमे किछि काम करिबा को चाहू नाही बा सिलेक्ट किछि ऑप्शन को सिलेक्शन करिबा को चाहू नाही, एस्केप की मार दबा, कैंसिल हे जिवो टास्क. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. Click dash checkbox to transition in the slide group of an animation tab if you want to move a slide automatically after stipulated time. Click dash checkbox of transition in a slide group of an animation tab if you want to move a slide automatically after stipulated time. Option A, automatically after. Option B, transition timer. Option C, transition after. Option D, automatic timer. And option E, none of these. Automatically after. Yes, automatically after होची right answer. जहाँ की elapse कर दी था से जो माने को टाइम टा माने जो एक्शन टा हबारा था से एक्शन टा को elapse कर देते बा छाड़ी दी थे and ता next action को से carry out करते. तो ट्रांजिशन आफ्टर होची सेही भली गोटे जिंस जहा कि आमे न चाहूथिबा सेटा को रखि देकी स्टिपुलेटेड टाइम बा निर्दिष्ट परे आउ नेक्स्ट टास्क ता से कैरी आउट करथे. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. डॉक्यूमेंट्स कन्वर्टेड टू डैश कैन बी पब्लिश्ड टू ए वेब. very interesting question, very common question. Documents converted to dash can be published into a web. Option A, HTTP. Option B, document file. Option C, machine language. Option D, HTML. Option E, none of these. S, HTML, hypertext markup language रे लिखा जाइथिबा कोड्स गुडा को जनरली हमरो वेब पेज रे ही डिस्प्ले ही पारे. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. व्हाट इज द स्टोरेज एरिया फॉर ईमेल मैसेज कैरेड कॉल्ड? व्हाट इज द स्टोरेज एरिया फॉर ईमेल मैसेज कॉल्ड? ऑप्शन ए, डायरेक्टरी. ऑप्शन बी, folder. Option C, mailbox. Option D, hard disk. None of these. Option C, mailbox. Mailbox रे ही हमर मेल गुडा को स्टोरेज हेता है. अच्छा, एनीवन कैन टेल मी मेलबॉक्स ता बेसिकली को जगह रे देखा जाए? जनरली हमर ईमेल रे ना अन्य कोनसी जगह रे. यदि के आउटलुक एक्सप्रेस के भी यूज करिथिबो मेलबॉक्स ता डायरेक्ट ता भीतर थाए, हले इनबॉक्स ही साधारणतः कॉमनली देखा जाए मैसेज को स्टोर करिबा पाई. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. टाइटल बार, रिबन, स्टेटस बार, व्यू and document workspace is factor of dash program of words. Option A, browser. Option B, Windows. Option C, Explorer. Option D, website. And option E, none of these. Option B is the right answer, Windows. से जो टाइटल बार, रिबन, स्टेटस बार, व्यू एगुडा सब देखा जाउची सेगुडा को गोटे विंडो बोली कहआ जाय. कारण कंट्रोल मेनू बॉक्स अछि, मेनू गुडा को अछि, ताकू गोटे आमे विंडो बोली कहू. साधारणतः आम मुंडरे पछताए विंडो माने तो गोटे ऑपरेटिंग सिस्टम हो ना, कंप्यूटर रो जोथिरे आमे ए सब फीचर्स गुडा का पाइबा, दैट इज ए विंडो. जने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फिटै छै कहबा एटा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रो विंडो. एक्सेल को स्टार्ट करि छै एटा कहबा एक्सेल रो विंडो. जस्ट लाइक दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. When you graph on picture in document, then your computer holds the data in dash. Option A, backup drive. Option B, restore file. Option C, clipboard. Option D, memory. And option E, none of these. When you graph on picture in document, then your computer holds the data in dash. Yes, option D is the right answer, memory. This is very simple thing. What happens when you press Ctrl plus V key? ऑप्शन गुडा पढ़ू नहीं तमे टिके बाय द वे क्विकली टिके तम स्टाइल रे टिके पढ़ी के आंसर दबो. काहेकि ना तमे जतले एग्जाम कोनोसी दबागु जीवो सेठी एमती सबुतिक ऑप्शन ठीक लागुथिबो. तमे तो कहबो कंट्रोल V तो गोटे सारे पचारसंती हो पेस्ट तो हबो कोउथरे गोटे पेस्ट बसथिबो ताको मार देथिबो ना. दैट इज रॉन्ग.
तमे भाबी कि करबा को पड़िबो कोटा होची ठीक आंसर सबुथरे पेस्ट पेस्ट लागि थिले भी ऑप्शन ए होची राइट आंसर द सिलेक्टेड आइटम्स इज पेस्टेड फ्रॉम द क्लिपबोर्ड जो क्लिपबोर्ड भितरे कहूचे कट कॉपी पेस्ट हमर थाए तो ऑप्शन ए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर द सिलेक्टेड आइटम इज पेस्टेड फ्रॉम द क्लिपबोर्ड सिलेक्टेड आइटम ना पेस्ट ही जाय परिबो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू all the following are included in typically computer programming language which are in currently except option A Java option B C++ option D Visual Basic Net option D machine language and option E none of these all of the following are included in typically computer programming language which are in the currently used except ha betito एस ऑप्शन डी मेसिन लैंग्वेज आ व्यवहार हो नाही आ सबु हमें व्यवहार करूची जावा व्यवहार होची सी प्लस प्लस व्यवहार होची विजुअल बेसिक नेट भी व्यवहार होची किंतु मेसिन लैंग्वेज ता कंप्यूटर भितरे अछि से जोटा कि कन्वर्ट करूची इंफॉर्मेशन ता नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू dash may be included in other folder while making hierarchical structures of the folder dash may be included in the other folder while making hierarchical structure of the folder hierarchical मान ता भीतर सेटा option A tied folder option B mini folder option C subfolder option D object and option E none of these option C is the right answer subfolder जितेबाला आम गोटे फोल्डर क्रिएशन करुचे एंड हायरार्चिकल ता भीतर पुनी आ गोटे फोल्डर क्रिएशन करुचे दैट हायरार्चिकल मेथड जो फोल्डर टा क्रिएशन करा जाय गोटे फोल्डर भितरे ताकू से मेन फोल्डर सब फोल्डर बोली कहा जाय सो द टाइम इज very short and due to the response of time we have to completed this class in this point and the next class onwards I will bring some another interesting questions for you. Thank you for joining this class. Okay, thank you. कोई पचास से कुछ नहीं है 50 से कुछ नहीं गला जितनी की रिकॉर्डिंग